Namaskar. Today we'll discuss on National Education Part 2. In the previous video, we have already discussed about National Education Policy 2020, its development, its general principles. Now I am showing the PowerPoint what we have discussed earlier. In the previous part one, we have discussed the evaluation of education policy, what commission and committee have been formed by Government of India from to time, and how the first, second, and third education policy have been launched by Government of India from time to time, and already discussed regarding the evaluation or emergence of 2020, how different committees have been formed under the TSR Subramaniam, then K. Kosturrangan, and the approval of committee. Then I have told you the visions, mission, purpose, and goals of education according to the education policy. Next one is the five pillars of National Education Policy 2020. Then the different chapters of National Education Policy 2020. Then I have in detail discussed regarding the 22 guiding principles of National Education Policy. On the basis of these guiding principles, the curriculum will be developed. The total policy is based on. Okay. So then I have told you what should be the nature of education according to NEP 2020. Then what will be the pedagogy as per NEP 2020. Then what should be the curriculum, the basic principles or motto of the curriculum as per NEP 2020. So let us discuss the school education. Dear friends, you know well the importance of school for better education. School education is the foundation stone on which the total infrastructure of education, particularly higher education, stands on. So if the school education is the good or the qualitative, the total superstructure of education will be strong, will be, we can say the very effective and productive. So in this chapter, we will discuss in detail regarding the school education. What changes have been occurred in the school education, we will discuss in detail. Dear friends, you know well about the NEP 2020 is really a milestone in the field of education. And in your NEP 2020, the school education has been restructured. Restructure means that as per 1986 National Education Policy, the school system was 10 plus 2 plus 3 pattern. It means that 10 years schooling, 2 years higher secondary, and 3 years degree course. But National Education Policy 2020 restructured the school education. It converted 10 plus 2 plus 3 pattern into 5 plus 3 plus 3 plus your 4. 5 refers to the and the total school education has been divided into 4 parts, that is your foundation stage, preparatory stage, middle stage, and your secondary stage. Foundation stage is of 5 years. It means that it is about ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି जो foundation stage କହିଲେ age is 3 to 8 years. It means that you are the pre-primary education, the ECC, early childhood care and education, has been added in the school education, and that is and adding 3 years of ECC and 2 years of schooling, that is your combined, a new stage has been developed, that is called the foundation stage. तो मूल स्तर बोली कहगला 2 वर्ष जो अंगनवाड़ी शिक्षा व्यवस्था थिला बालवाड़ी शिक्षा व्यवस्था थिला से 3 वर्ष प्लस 2 वर्ष विद्यालय शिक्षा क्लास 1 और क्लास 2 आकु मिसे गोटे फाउंडेशन स्टेज करागला. Similarly from class 3 to 5, that is called the preparatory stage, 3 4 5. 6 7 8 is called the middle stage, and 9 10 11 12 is called the your secondary stage. This is the structure of education according to National Education Policy 2020. Let us discuss the first thing, that the preschooling, about the ECC, early child care and education. Article 45 of the Indian Constitution emphasizes on the early childhood care and education, and this ECC speaks about you are providing the preschooling to the children below the age group 3 plus and below 5. And the purpose of ACC is that to motivate the children towards this school,
And another thing is that to provide the nutritious food to the children for better health. This is the main purpose of the ECC. And the new education policy, and the, the preschooling was, we can say, optional. It was not mandatory. But now the new education policy, or NEP 2020, included the ECC, early childhood care and education, in the school education, and it has become the mandatory for all. At the age of 3 years, the children will come to the school for the preschooling. So quality ECC is not available to crore of young children, particularly children from socio-economically disadvantaged categories. तो ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି କହୁଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଟି କୋଟି ପିଲା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ପଛୁଆ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ କରିବା ପାଇଁ ତ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। ଏବଂ ଆ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏକ୍ସେସ୍ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ 3 to 6 years, ମାନେ ଇସିସି ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ, ଏହାର ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି 3 to 6 years। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବ, ସେଠି କ'ଣ କରିବ 3 ବର୍ଷ ପ୍ରି ସ୍କୁଲିଂ ପଢିବ। ଆଣ୍ଡ ଏସିସି ୱିଲ୍ ବି ଡେଲିଭର୍ଡ ଟୁ ଦି ଅଙ୍ଗନବାଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ୍ସ। ଏଟାକୁ କିଏ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପଢେଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଦି ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ଟ୍ରେନର୍ସ, ଦି ଟିଚର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ, they will be given the special training, and the Anganwadi centers will be empowered, and the infrastructural facilities and resources will be made available in all Anganwadi centers. That's why all children can get better preschooling। अर्थात अंगनवाड़ी सेंटर गुड़ाक, बालवाड़ी सेंटर गुड़ाक जोड़ा सब प्राक विद्यालय स्तर थिला सेगुड़ा को कौन करा मजबूत करा सबु प्रकार शैक्षिक संबल से जोगाई दिज्व, शिक्षक मानक प्रशिक्षण दिज्व, से जो वर्कर्स अच्छा से प्रशिक्षण दिज्व, से कौन कर स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था करा ये गला आपनकर ईसीसी कथा। एबे देखिबा आउ कोन अछि स्कूल एजुकेशन मुख्य अवस्था। फर्स्ट, अनदर थिंग इज attainment of foundational literacy and numeracy। I have told you in the previous video that the main goal of your national education policy 2020 is to provide at least foundational literacy and numeracy to all children by 2030। What is the present position? Around large proportion of students currently in elementary schools, estimated to be the 5 crore in number, have not attained foundational literacy and numeracy। Foundational literacy and numeracy means that the ability to read and comprehend basic text and ability to carry out basic addition and subtraction। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା, ମୌଳିକ ଅଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ବା ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଅଛି, ବହି ଅଛି, ତାକୁ ବି ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ବି ଭଲରେ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି 2020 କହୁଛି 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ जो अंक ज्ञान हासिल करेंगे, विशेषकर जो 5 कोटी पिला जो एभलिया जो साधारण जो मौलिक ज्ञान तांक पाखरे नाही, से ज्ञानर संरचना करा जिवो एवं सेमानकु मुख्य स्रोतर आनियाकु प्रयास करा जिवो। ए होची नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रो फ्लैगशिप प्रोग्राम बा गोटे स्कीम कहले अत्युक्ति हम नाही। तेणु द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। एभलिया पॉलिसी ऑलरेडी कर सारानी एवं सब विद्यालय गुड़िक कौन है ना से सब जिन स्टार्ट कर दिया जाइए। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी national education policy has made the national book promotion policy to ensure the availability, accessibility and quality and readership of books across the geographies, language and levels and genders। समस्त पाखरे पिलांक पाखरे जो पुस्तक पहुंची पारिबो, गुणात्मक पुस्तक पहुंची पारिबो, से संबंध में व्यवस्था करा जायछि। एवं
and the national repository high quality resources on FLN will be made available on the digital infrastructure of knowledge sharing। बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा होची जो एफएलएन रो लक्ष्य को हासिल करबा पई सरकार सब प्रकार जो पुस्तक आवश्यक अछि बा शिक्षण संबल आवश्यक अछि हाई क्वालिटी उन्नत मानर कौन होची ना विभिन्न संबल दीक्षा माध्यम रे जोगे दिया जे बोली सरकार को प्रतिश्रुति दैछन्ते एवं ताहा भी करा जाउची वर्तमान। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଦି another most important point or dimension associated to school education is that to to minimize to curtail the dropout rates and ensure universal access to education at all levels। I have already told you in the part 1 that the government of India with the collaboration of all states promised to provide universal school education to all children between age group 6 to 14, and our your right to education act also promises and ensures to provide elementary education quality elementary education to all। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ସବୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପିଲା ଯେପରି ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं आमर जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 करथिला किंतु दुर्भाग्यर विषय आज पर्यंत आमे सेही लक्ष्य को हासिल करि पारि नाहंती। एबे मध्य अधिकांश पिला कोन होउचंती ना ड्रॉप आउट स्कूल छाडी पळे जाउचंती। रिपोर्ट सेज द ग्रोस एनरोलमेंट फॉर ग्रेड 6 to 8 was 90+9%, while for grades 9 to 10 and 11 to 12 was only 79.3% and 56.5% respectively। आज मध्य प्राथमिक विद्यालय प्राय 10% पिला नाम लेखौ नांती एवं उच्च स्तर आमे जानि छथि हायर एजुकेशन रे एबे मध्य नाम लेखा हार 30% अछि only 30%। That's why the government of India with the collaboration of the states tried to promote what elementary education and secondary education to all children। It means that NEP 2020 aims at 100% gross enrollment ratio in preschool to secondary level by 2030। For that the initiatives will be 2020-30 मसीहा भितर 100% जिमिति मोट नाम पंजीकरण हार बढ़िबो सेतिपय गुरुत्व आरोप करा जायछि। सेतिपय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गुडाय गुडी कोन सेवरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस हैव बीन मेड by National Education Policy 2020। What are the provisions? Providing effective and sufficient infrastructure। Without infrastructure, without school building, classrooms, learning materials, your library, laboratory, etc., quality education cannot be ensured। That's why National Education Policy 2020 you are emphasizing to provide effective and sufficient infrastructure to promote high quality school education to the children। पिला मानकु गुणात्मक शिक्षा प्रदान करिया पय सब प्रकार जो भित्तिभूमिर व्यवस्था करिया पय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ना कोन जे सुनिश्चित करिया पय कहिछि। ता सहित open and distance learning program offered by the NIOS state open school will be expanded and strengthened with special emphasis on socio-economically disadvantaged category। विशेष करी समाजर सामाजिक अर्थनैतिक पछुआ वर्गर थिबा पिला मानकु मुख्य स्रोत रे शामिल करबा पाए जो मुक्त विद्यालय व्यवस्था अछि एनआईएस भलिया संगठन अछि ता माध्यम रे सब पिला के पाखरे जदि शिक्षा पहुंची परिबो समस्त जेपरि शिक्षा ग्रहण करि परिबे सेति पय गुरुत्व आरोप करा जाय छै। Another thing that those students who left the school dropouts, we can say the out of school children or dropouts, they will be tracked। अर्थात जो माने विद्यालय को आसी नाहंती कि विद्यालय रो अधारु पाठ छाड़ दे पळै छथि सेमान को ट्रैकिंग करिवा पय एक सुंदर व्यवस्था करिवा पय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोन करछि ना व्यवस्था करछि। लेट मी डिस्कस अबाउट द curriculum and pedagogy at the school level। Our education system is of general education nature। Development of technical and vocational education is quite unsatisfactory, so our education is unproductive, hence number of unemployed persons is increased day by day। The observation of NEP 2020 that जो कमिटी NEP माने गठन करा जायतिला से कमिटी रो ऑब्जर्वेशन होची हमरो शिक्षा साधारण शिक्षा पर आधारित अछि। आमे तेणु करी कोनोसी प्रकार पिला मानकु वृत्तिगत शिक्षा बा पेशागत शिक्षा में दउ नाहंती जहा फल रे पिला मानक भितरे जो कोन होची ना जो माने
तो आत्मनिर्भरशीलता बढ़ी होना स्वावलंबनशीलता बढ़ी पारना एवं बेकार संख्या बढ़ुची बेरोजगार संख्या बढ़ुची से नूतन शिक्षा नीति शिक्षा व्यवस्था को कौन कर पुनर्गठन कर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज रिकंस्ट्रक्टेड द स्कूल एजुकेशन स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फर्स्ट इट restructured the school curriculum or school pattern that is 10 plus 2 plus 3 pattern converted to 5 plus 3 plus 3 plus 4 pattern. Okay, and the special features associating the curriculum and pedagogy are first thing is that reduced curriculum content. It emphasizes on the to reduce the content content in the curriculum, and it focuses more and more critical thinking, developing the critical thinking and experiential learning of the students. ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଧିକ ପାଇପାରିବେ, ସେଥି ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଏବଂ ଇଟ୍ emphasizes to freedom of choosing variety of subjects without any your restriction, without any we can do watertight difference between the arts, science, commerce, curricular, extracurricular, co-curricular activity, vocational and academic stream। अर्थात पिलामानंकु स्वाधीनता दियाजिव, स्वतंत्रता दियाजिव, सेमाने ताकर इच्छा अनुसार ताकर रुचि अभिरुचि एवं सामर्थ्य अनुसार विषय चयन करेंगे। जो आमर थिला पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम अतिरिक्त पाठ्यक्रम कि कला वाणिज्य कि विज्ञान बा वृत्तिगत शिक्षा एवं ये जो कथा थिला जो भिन्नता थिला जो डिफरेंस थिला माने डिसिप्लिन आधार रे विषय आधार रे ताकू भांगी दिया जिवो। पिला माने निज इच्छा अनुसार जे कोनोस विषय चॉइस करि परिबे, से माने विज्ञान रो विषय पढि परिबे, गणित रो माने कोन कला रो विषय पढि परिबे, वाणिज्य रो विषय पढि परिबे, से माने वृत्तिगत शिक्षा सहित साधारण शिक्षा मध्ये पढि परिबे। अर्थात पिला मानकु जो गाइडिंग प्रिंसिपल एक रहिला पिलामानଙ୍କର सामर्थ्य अनुसार तांकर अंतर्निहित गुणावली अनुसार तांकर लुकायित गुणावली अनुसार कौन कराଯିବ पिलामानଙ୍କୁ पाठ पढ़िया ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ NEP ensures to provide or to introduce the contemporary subjects। ତା ସହିତ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ जो ଆଜିର ଦୁନିଆରେ जो विज्ञान ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ जो आवश्यकता ରହିଛି and the basis of the need of the society, need of the world, and keeping we can say the compete with the world also or the world scenario, the national education policy 2020 emphasizes to provide the contemporary subjects, teaching on the contemporary subject like artificial intelligence, design thinking, okay, holistic health, organic living, environmental education, global citizenship education. So such type of the contemporary subjects will be introduced in the school education. And the most important thing is that the policy ensures to provide vocational education from class fifth पंचम श्रेणी पिला वृत्तिगत शिक्षा दिज्व। फॉर व्हाट आई थिंक देयर आर टू इंपोर्टेंट थिंग। फर्स्ट थिंग दैट बिकॉज ऑफ बाय गिविंग द वोकेशनल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स दे कैन नो, दे कैन रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द लेबर, दे कैन अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ द लेबर, एंड सेकंड थिंग दैट दे कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। अर्थात मूल माने वृत्तिगत शिक्षा प्रदान करिवार मूल रे दुईटी जिनिस थिला बेले मते अनुभव होउछि। प्रथम कथा होछि पिला माने श्रमर मर्यादा को बुझी पारिबे। प्रत्येक कर्म एवं प्रत्येक कर्मजीवी प्रत्येक श्रम और श्रमजीवी जो परिश्रम तांकर जो मूल्य तांकर जो समाज पर अवदान ताको बुझिबे, ता सहित निजे मध्य किछि काम करी स्वावलंबी हो पारे, आत्मनिर्भरशील हो पारे। अर्थात वोकेशनल एजुकेशन इज ए वी कैन से इज ए विल पेव द वे टू बिल्ड अप इंडिया द आत्मनिर्भर भारत। दैट्स व्हाई National Education Policy 2020 recommends to frame National Curriculum Framework, and you know the National Curriculum Framework already framed and launched by the National Steering Committee for National Curriculum Framework in 2023. And let us discuss about what is the students assessment in the school education। विद्यालय शिक्षा रे assessment ପାଇଁ कोन सब व्यवस्था करा जायछि। एबे करा हैछि कोन स्कूल एजुकेशन इन ग्रेड 3, 5, 8।
ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମରେ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦଶମ ଆଉ ବାର କ୍ଲାସରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ will be conducted in grade 3, 5 and 8 and board examination for grade 10 and 12 will be conducted but in redesign. It means that the assessment will be not to test the memory of the students, not simply the your knowledge of the students, rather the education policy recommends to assess the critical thinking, problem solving capacity, inquiry capacity, conceptual understanding of the students. ପିଲାମାନେ କେତେ ଦୂର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଅବଧାରణ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କେମିତି ହେଇଛି, ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ କେତେ ହେଇଛି, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ କେମିତି ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛି। ତା ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ସ ୟୁଆର Parak will be set off as the standard setting body under the Department of Education. ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ପରଖ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟିଂ ବଡି ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯିବ। ପରଖ ଦ୍ୱାରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ଫର ନଲେଜ ଫର ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣାବଳୀ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ, ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ଏସବୁ କଥାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କଥା କହିଛି। ୟୁ ଅଲରେଡି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଜ୍ ପର ଦି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ NEP 2020, National Testing Agency has already started its work. Now it conducts the entrance examination of UG, PG, and it is also proposed to start the entrance NET examination, NEET examination, and etc. by the National Testing Agency. So, what are the other features of National Education Policy? I have already told you mother tongue. Mother tongue is emphasized by National Education Policy 2020, ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛି। ଏହା କହୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ବା ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଘର ଭାଷାରେ ବା ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ କୋଳ ଭାଷା ବା ଘର ଭାଷା ବା ମାତୃଭାଷା ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ following the footpath of Mahatma Gandhi, the basic education of Mahatma Gandhi and other educationists, National Education Policy 2020 emphasizes to strongly recommends to provide education through mother tongue up to class 5, irrespective of medium school medium. So it may be English medium or Odia medium, whatever it may be. Besides, it also emphasizes on the multilingualism. It means that this national education policy emphasizes on the 3 language formula: your classical language, your regional language, your international language, and particularly for the Divyangas or the physically challenged children, sign language should be developed, and each and every child, irrespective of their physical condition or mental condition, should get education. That is a very important thing. 3 language formula with greater flexibility କୁହାଯାଇଛି। 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ନମନୀୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବା ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଫୋକସ୍ ଟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଭଳି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତ ଭଳି, ଯେଉଁ ମାଲାୟାଲମ ଭଳି ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ जो शास्त्रीय भाषा अच्छी से सांस्कृतिक भाषा सहित जो पाली भली भाषा जो अच्छी से भली भाषा गुरुत्व आरोप कर इक्विटेबल एंड इनक्लूसिव एजुकेशन पिलामानंको भी जो कहूली अलरेडी जो अंतर्निर्वेशी शिक्षा सबु वर्गर पिला सबु स्तर पिला ग्राम सहर विभिन्न सामाजिक जो वर्ग अच्छा धार्मिक वर्ग अच्छा एवं सबु स्तर पिला माने जेभली भाव में शिक्षा बा विद्यालय शिक्षा भित्तिक आकृष्ट हेबे, विद्यालय शिक्षा भितर से कौन करेंगे विद्यालय शिक्षा भित्तिक आसीपारे, जो समाज मुख्य स्तर माने जो मेन स्ट्रीम रे पहुंची पारे से गुरुत्व दिया जायछि। बिसाइड्स द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी has emphasized the teacher education. The teacher education has been also reconstructed because without good teachers that school education or any education cannot be possible. That's why for school education
that 4 years teacher education, that is integrated teacher education program will be launched by 2030. By 2030 throughout the country ITP program will be launched, अर्थात 4 वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पिलाମାନଙ୍କୁ दियाଯିବ। Besides, it emphasizes on the school complex or cluster system। स्कूल कम्प्लेक्स और क्लस्टर सिस्टम उपर बेसी गुरुत्व दिया जायछि, अर्थात माने केतोटी स्कूल को नै गोटे क्लस्टर तयारी हेबो ता विषय एवं ट्यूनिंग और पेयरिंग ऑफ वन प्राइवेट और वन पब्लिक स्कूल। जो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल भितरे गोटे 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 कोन बैलेंस आनिबा पई बा तांको भितरे गोटे प्रकार कोन ना बेटर रिलेशनशिप को डेभलप करिया पई मध्य व्यवस्था कराइछि एवं पाख पाख स्कूल नै क्लस्टर व्यवस्था करा जिवो। अर्थात स्कूल एजुकेशन रो बा गुणात्मक विद्यालय शिक्षा प्रदान करिया पई ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भरपूर प्रयास करछि। सो if we implement, or if the government is able to implement all the provisions of national education policy 2020 meant for the school education, I hope our country will be the Atmanirbhar Bharat or developed country or the new Bharat through the quality school education. And the school education emphasizes on the three important things, that is your knowledge, capacity and value. The students not only develop their cognitive aspects but also their affective and psychomotor domains also. They will be the person with good personality, socio personality development, socio quality will be developed. The value system will be developed, cultivated in the students. That's why this is regarding the your national education policy 2020 on school education. Thank you.